We will wait for 2 to 3 minutes so that people may get joined. Then we can start the class. Let us wait for 2 to 3 minutes. सर एक क्वेश्चन पूछना था। Yes. सर ट्रांसवर्स लोडिंग एक बार समझा सकते हैं सर? That I will cover at the end. Let me cover ओके today's सर। topic first, or else we will be very slow. I'll discuss those things later on. Fine. ओके सर, ओके सर। After the class, I'll discuss those things. Okay, DKD sir is writing. Students attendance link is shared already. It will be active from 3:30 p.m. Okay. Where are other people? Will they join or they won't join? It's already 3:02 p.m. सर व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार इन्फॉर्म कर दूं क्या? People are no. I have given the information in the WhatsApp group. No need to tell again. Good afternoon, sir. ओके सर। Good afternoon. Good afternoon. I'll wait till 3:05 p.m. At 3:05 p.m. I'll start the class. Good Let us afternoon, wait. sir. Good afternoon. Let us wait for 2 more minutes. Then at 3:05 p.m. I will start the class. By the time you can do is that you all can give your attendance in the chat box. Please give your attendance in the chat box. Write your class roll number. By that time, let me present my screen first. Can you see the slides? यस सर। Okay. Okay. So I think it is already 3:05 p.m. I will not wait further and let us start the class. By the way, one information is given by DKD sir that student attendance link is shared already. It will be active from 3:30 p.m. So please keep this thing in mind that attendance link will be active from 3:30 p.m. Please fill up that attendance link. Okay, sir. Okay.
So in the last class, I think we have solved some problems, 2 to 3 problems we have solved. And we stopped at this problem, I section problem. If you remember. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Let us move forward. Today, basically, I will be covering the theory of failure part of machine design. Fine. So, in the last class, let me give you a brief that what we have covered. We have seen that if any static load is acting in any component, then how we can design that component on the basis of tensile strength, on the basis of compressive strength, on the basis of bending strength, and on the basis of torsional strength. And we solved some 2 to 3 problems. In today's class, now we will discuss that if in the same component combined stresses are acting, that means more than one static load is acting in that component, then how to design that component. Earlier, what was happening? Earlier, say if I am having this mobile, in this mobile, say only tensile load is acting. On the basis of that tensile load, this body is undergoing tensile stress, or this body is subjected to bending, or this body is subjected to torsion. But now what will happen is that the same body will be subjected to combined loading. That means it can be possible that the same body is subjected to bending also as well as tension also. Then how to design the body? If the same body is subjected to say tension also as well as torsion also, then how to design that body, that we will look over here. Okay, let us consider the case of a cantilever beam in which two forces or two loads are acting. Load P1 is due to load P1, bending is happening in this cantilever beam because load P1 will try to bend this cantilever beam along this fixed end, and this load P2 will try to pull this cantilever beam from the fixed end. That means I can say that by looking at this problem, P1 is due to load P1, bending stress will occur in the entire problem, and due to load P2, tensile stress is occurring in the entire problem. What I will do is that separately I will calculate tensile load due to load P2. Separately I will calculate bending stress due to load P1. Then I will add those two stresses. That stress will be the maximum stress in the component, and then we will equate that maximum stress with the either yield stress or ultimate stress depending upon the type of material of the beam. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Clear. okay. So if I see in this diagram, P1 into L will create a bending moment at this fixed point. Then if I want to design this beam for bending, I will use bending equation, that is M by I equal to sigma by Y equal to E by R. Fine. If I take the combination of first and the second part, that is M by I equal to sigma by Y, I can write M is equal to sigma into Y by I. And I know, I told you in the last class that I by Y is nothing but Z, moment of resistance. So, due to load P1, bending stress developed in this beam is say sigma T1, which is nothing but M by Z. M is what? M is the bending moment, and from the diagram it is very much clear that the bending moment is P1 into L. So the bending stress formula becomes sigma T1 is equal to P1 into L by Z. Now, but Sir, can you please explain this once again, sir? M by Z. M by Z, see, okay, let me use, wait. Uh, hmm. Is my wife's screen is visible to you all?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. What I was telling is, I know that if a body bend due to some load, then in that body bending stress occurs. Then we will design that body for bending stress. So in order to find out the value of bending stress, I need to know the bending equation. That bending equation is M by I equal to sigma by Y equal to E by R. If I take the combination of these two expressions, then I can write that, okay, then I can write that sigma is equal to M into Y by I. If you take the reciprocal of Y by I, that means sigma is equal to, I am replacing I by Y by a term called Z, that is called moment of resistance, and this Z is nothing but I Yes, sir. by Y, because this Z is called moment of resistance and it determines the strength of the beam. How much load that the beam can carry, that is determined by this factor called moment of resistance. Now it is clear how that Z came. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes. Okay. So let me go back to the PPT. Okay, fine. So bending stress is P1 into L by Z. Let it is sigma T1. Now, since in this problem one more load is acting, that is load P2, and from the problem it is very much clear that P2 is creating a tensile stress in the given problem. So tensile stress generated due to this load P2 will be how much? Sigma T2 is equal to P2 by cross-sectional area A. Now, since it is a problem of combined stress, so I have to add the bending stress as well as the tensile stress, because if I don't add, then I will not get the maximum stress acting in the beam. Then I cannot equate this maximum stress with the maximum strength of the beam, that is whether the beam is undergoing yielding or the beam is undergoing say there is no yielding, ultimately it gets fractured. So let us add. If I add, then the total stress generated in the problem is how much? It is P1 into L by Z plus P2 by A. But if you see the, see, since in the entire problem bending is happening, so I know that bending stress distribution is given like this. This is the bending stress distribution, yes or no? Say this is the top fiber of the beam, this is the bottom fiber of the beam. At the top fiber, stress is maximum, and that's it. That is nothing but the tensile stress. And at the bottommost fiber, stress again it will be maximum, but it will be in compressive direction, but it will be in compressive nature, and at the midpoint stress will be zero. Fine. So for this portion, for top portion of the fiber, if I want to get the value of maximum stress generated in the problem, see, if you want to, then the maximum stress will be this bending stress P1 into L by Z plus tensile stress P2 by A. Why I am adding it? Because the bending stress is positive. But if I want to calculate the value of the overall stress at the bottommost portion, then here the bending stress will be negative because it is compressive in nature. So if it is compressive in nature, it will be minus P1 into L by Z plus P2 by A. So now from these two expressions, I can see that definitely
this total stress at the top fiber will be maximum, and I have to design anything for maximum, any component for maximum condition only, because if it is valid for maximum condition, the same component will obey for minimum condition also. Fine. So the design equation becomes the maximum stress generated in the beam, that is nothing but P1 into L by Z plus P2 by A, which is equal to, now if this material is made up of brittle material, then it will be SUT by factor of safety, and if the beam is made up of ductile material, then the beam will fail according to yielding criteria, then it will be SYT by factor of safety. Then we will use this expression to calculate the unknown part of the problem. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके ओके सर एक चीज जो आपने लिखे है कि बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा T1 is equal to M by Z is equal to P1L by Z. P1L means the formula of the moment, right? yes P, in this problem, see, if I want to get the value of moment at this point, it will be what? P1 into L. This is P1 into perpendicular length. Okay. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Should I move forward? Okay. Yes, sir. Yes. Next. Now, next condition is if in the same problem, I have taken one section. If in that section normal stress is also acting as well as shear stress is acting. In the last problem, bending and normal stress was acting. Now, in that same problem, shear as well as normal stress is acting. Then how I will design? Can anyone say how I will design now? In the last problem, bending and tensile stress was acting. Now in the current problem, tensile and shear stress is acting. Or it can be tensile, it can be compressive. Basically normal Sir, stress. motorcycle. It is acting. Now how I will design this component? Sir, motorcycle. Yes. By using motorcycle. I will use Mohr circle. I will use Mohr circle. What is Mohr circle? Mohr circle is nothing but a circle on which it is nothing but a circle, and in that circle the periphery point of each and every point of the circle represent a plane of stress. For example, the same problem, if I want to show it in Mohr circle, how I will show? Wait, let me delete these things. Okay. Now that same problem, if I want to draw the Mohr circle, I know that in Mohr circle there are two axes. One is y-axis and another one is x-axis. Now, can anybody can tell me what is there in x-axis? Sigma. Yes, normal stress sigma lies along x-axis. What lies along y-axis? Shear stress. Tau. Shear stress lies along x-axis. Fine. Now, if I want to see this formula of maximum shear stress and maximum and minimum principal stress basically comes from the Mohr circle. So, if you understand the concept of Mohr circle, from that circle you can determine these formulas. Fine. Now, this is the condition. What I told you that Mohr circle is nothing but a circle. But the speciality of that circle is all the peripheral points of the circle, that means boundary points of the circle, represent a state of stress point at any particular plane. So if I consider this plane, if I consider this point, at this point, coordinate is how much? Along x-axis, coordinate is sigma x. Along y-axis, coordinate is tau. Let us assume that this sigma is positive and this tau is positive. Fine. That means coordinate, this is a plane, at this plane
state of stress is nothing but a coordinate point, and along plus x axis that is sigma x, and along plus y axis that is tau. So if it is sigma x, say this is that point sigma x from the origin, and tau in plus y, say this is that tau, this is that tau, that means this point is nothing but sigma x comma tau xy. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Fine. टाउ Okay. एक्स Now वाई वाला चीज समझ में नहीं आ रहा, मतलब टाउ एक्स वाई ये कैसे हो रहा है? see, there are three planes: x, y, and z plane. If you are keeping this component in x, y plane, fine. If अच्छा. you apply shear stress, so in this plane, so your body will move in which plane? It will move in x, y plane. You have to take the x, y plane. If you are keeping your body in y, z plane, then you have to take it as tau y, z or tau z x. Depend from plane to plane. Here I am ओके only सर. talking about 2D object. I am talking about x and y plane. I am not talking about z plane. हाँ, obviously because motorcycle is only applicable in 2D, two dimensional, right? No, it is also applicable in 3D also. It is also Oh, अच्छा. applicable in 3D also. That is not there in your neither in your GATE syllabus nor in your normal BTech syllabus. But the Mohr circle is applicable for 3D also. There is a separate Okay. procedure to draw that Mohr circle. Fine. Okay. Okay. So I got this stress point. Fine. Now this point is exactly identical to this point, but in negative direction. Similarly, this state of stress point is exactly identical to this state of stress point, but in negative direction. Now let us assume this plane. For this plane, at this point, coordinate point is how much? Sigma y, comma tau. Sigma y comma tau, because I have taken sigma along x-axis and tau along y-axis. So coordinate will be sigma y comma tau. Sigma y this time will be in negative direction, and tau will be in negative. Let me draw it over here. Fine. Now this is your sigma x. This is your sigma x. Fine. So if this is sigma y, and I am assuming that sigma y is less than sigma x. That will depend from problem to problem. Fine. So if sigma y is less, say this is that sigma y from here to this point. This is your sigma y. Now from this point, I have to come downward. See, there is a tau, equal and opposite nature of tau. So this much length of tau, from this point I have to go down. This will be your tau. If this is tau xy, this will be your tau yx. Both are complementary shear stresses. Now if you want to draw the Mohr circle, you join this point to this point by a line. Fine. Take this line as the diametrical line. Half of the diameter is radius. Place your compass at this point. Fine. Take this much length and draw a circle. This is your Sir, what about sigma y, sir? This is sigma y. This point. Yes, sir. Yes, sir. Sigma y. This point, if say this is point A. This is point B. Point B is sigma y, comma tau yx. If you are writing xy over here, you have to write sir, sigma y was negative, sir, in the diagram. Yes, no, it is not Sigma. negative. See, wait. Let me go back to that diagram. See, this is my condition. Say this is point A. This is point A. This is point B. At point A, what I told in Mohr circle, sigma is always along x-axis. Whether it is sigma x, whether it is sigma y, or it is sigma z. And tau is always along y-axis. Whether it is tau y, tau z, tau xy, tau yz.
So at this, and I am assuming that sigma x is greater than sigma y. Fine. So at this point, coordinate of this material at this point is how much? Sigma x comma tau. Since tau is acting upward, so I am taking it as positive. So from origin, this is my sigma x. At this point, this is my tau. I got my point A, sigma x comma tau xy. Next, because this plane is identical to this plane, equal and opposite. This plane is identical to this plane, equal and opposite. So no need to draw all the 4 points. If I get the value, stress value, if I get the state of stress at this plane and at this plane, my problem is solved. Now at this point, say this is point B. At this point, coordinate of this object is how much? Sigma y along x direction. Don't see this is y. This is not y. This is x, because I am taking sigma always along x direction and tau always along y direction. So this is sigma y comma tau, but tau will be negative. See, if this is tau positive, this will be tau negative. If this is tau positive, this will be tau negative, but of same amount. So from this point to this point is my sigma y, then this is my tau yx, which is equal to tau xy. So you got point B, you got point A, join A to B. Now A to B is nothing but the diameter of your Mohr circle. So this will be your central point C. Take your compass, measure CA and draw a circle. This is your Mohr circle. If you want to find out, now in the speciality of Mohr circle is that each and every point, if you consider this point, if you consider this point, you consider this point, or you consider any point on the periphery of the circle, always this point represent some value of sigma x and some value of sigma y. Always this point represents some value of sigma and some value of tau. This is the speciality of Mohr circle. And from this Mohr circle, you get to know that this extreme point, this is your sigma 1, principal stress value, sigma 1, and this extreme most point along x-axis, your sigma 2. This is sigma 2, and this is your sigma 1, principal plane. And this plane where sigma 2 and sigma 1 is acting, this is known as principal plane. In this plane, you see there is no shear stress. Shear stress is 0. That is the definition of principal plane, that in principal plane shear stress cannot exist. Now the concept is clear? Yes, sir. Okay. Okay. Yes. Sir, can you mark this point A and B on that rectangle in the PDF? This is point I cannot mark because this is Google. I can tell you. See, in this, Yes, wait, in this rectangle, the right hand side portion where it is sigma x and tau, this point is your A. Sir, the intersection part. Yes, yes. Okay, okay, sir. Because see, stress always acts through a point. See, stress is acting through this point and shear stress is acting along this plane. Normal stress always acts through a point. Fine. So at this point, state of stress is sigma x comma tau. At this point, state of stress is sigma y comma minus tau. Clear? Yes, Sir, can you explain that why shear stress is not there in principal's plane? Check this diagram. Yes, Check sir. this diagram. This x-axis. Check this x-axis. In x-axis there is no shear stress. कहाँ से होगा? भाई आप जब मोहर सर्कल आप तो ये एज्यूम ही करते हो कि आपका जो x-axis पे जो भी स्ट्रेस लाई करेगा that is your normal stress. Y-axis लाई करेगा that is your shear stress. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़ दो, उसके बाद आप कहीं पर भी कोई भी लाइन ले लो, वो हर पॉइंट पे शियर स्ट्रेस लाई करेगा और नॉर्मल स्ट्रेस लाई करेगा. ओनली ये एक पर्टिकुलर पॉइंट लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है, एंड
लाइन, यहाँ पे कभी भी shear stress lie नहीं करेगा. So that's why that line is known as principal plane line in Mohr circle where shear stress is 0. Okay, sir. Thank you. ठीक है, किसी को और कोई डाउट है कुछ? No, sir. Okay. So from this expression, from this diagram, if you apply the geometry, you will get these formula that maximum principal stress, that means this value of this sigma 1 and this sigma 2 comes out to be sigma x plus sigma y by 2 plus minus under root sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square, where if you take the plus sign, you will get sigma 1 maximum. If you take this minus sign, you will get sigma 2 minimum. So one is your maximum principal stress, another one is your minimum principal stress, and both these stress always lie along the principal plane where shear stress is 0. This is the formula for principal stress, which you have to keep in mind while solving problems. And second one is maximum shear stress, tau max. Again, from that diagram, if you apply the geometry from this diagram, you will get to know that this part, the part which is inside the root, this part is nothing but your maximum shear stress part. That is tau max is equal to under root sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square. And you have also studied that this maximum shear stress acts at an angle of 45 degree. At an angle of 45 degrees. So you will get this value of tau max when you rotate this, means if you take any, if you are taking this object, and if you are taking, say, if you are cutting this object by some angle, say theta, when you are representing that theta in your Mohr circle, when that theta will be 45 degree, then you will get the condition of maximum shear stress, that is tau max equal to x minus y by 2 whole square plus tau square. In terms of principal stresses, means when you will substitute the value of sigma 1 and sigma 2 in place of sigma x and sigma y, then you will get maximum shear stress as tau max is equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2. That means these three equations I have to keep in mind while solving problems. You have Sir, tau max is equals to sigma 1 minus sigma 2 at 45 degree. At 45 degrees, this equation is valid. This tau max equation in terms of x and y, in terms of sigma 1 and sigma 2 is valid only at theta equal to 45 degrees. It is written plane of maximum shear stress is at 45 degree with respect to the principal plane. That means this is my principal plane. Now my principal plane is lying on the x-axis. If you rotate this principal plane by an angle theta equal to 45 degrees, say this plane is over here, say this is that plane, and if this angle is 45 degree, then on this plane you will get the value of maximum shear stress. And you also know that in Mohr circle, say if theta is 40 degree in that problem, in Mohr circle everything turn out to be 2 times of that angle. Yes or no? आपने ये पढ़ा है? मोहर सर्कल में जो भी आप एंगल लेते हो वो 2 टाइम्स हो जाता है. मैं भी यहाँ पे डेरिवेशन करा नहीं रहा हूँ, बट अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोहर सर्कल में जो भी आप एंगल डील करते हो दैट इज 2 टाइम्स फ्रॉम द एंगल व्हिच यू गेट फ्रॉम द नॉर्मल फिगर. सो अगर ये 45 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इन मोहर सर्कल दैट थीटा विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मच, 90 डिग्री. तो अगर थीटा 90 है देन this will be that line of maximum shear, this will be that maximum shear plane. अब देखो यहाँ पे tau maximum है, this is tau max, negative direction में this is tau max. So along that formula is valid, sigma 1 minus sigma 2 by 2 or under root of x minus y by 2 whole square plus tau square. आया समझ में? Yes, sir. हाँ सर, क्लियर है. किसी को डाउट है कोई? ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको उतना ध्यान डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको मोहर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं वो आना चाहिए, क्योंकि मोहर सर्कल पूछ देता है डायग्राम में. इस टाइप का डायग्राम में थोड़ा बहुत चेंज करके 4 ऑप्शन दे देगा मोहर सर्कल का, बोलेगा कि कौन सा डायग्राम के लिए कौन सा मोहर सर्कल करेक्ट है, तो आपको चूज करना पड़ेगा. ठीक है, आगे बढ़े.
हेलो. हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर आगे. Okay. Next comes the theory of failure. This is one of the most important topic in machine design. यहाँ से क्वेश्चन आता है, गेट में यहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो ऑलरेडी तो मैं ये पढ़ा चुका हूँ, मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बस फॉर्मूले से डील करूंगा. ठीक है, तो टोटल 5 टाइप के थ्योरी ऑफ फेलियर्स है. फर्स्ट वन इज योर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर. Second one is maximum shear stress theory of failure. Third one is maximum principal strain theory of failure. Fourth one, maximum distortion energy theory of failure. And the fifth one is maximum total strain energy theory of failure. अब इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कि डक्टाइल मटेरियल के लिए, फॉर डक्टाइल मटेरियल व्हिच थ्योरी ऑफ फेलियर इज मोस्ट सुटेबल. 4 ऑप्शन दे देगा. Shear stress theory हो. which theory of failure is most suitable. 4 ऑप्शन दे देगा आपको. फाइन, तो आप ध्यान रखना, ठीक है, आप तो पढ़ोगे ही किताब से डिटेल में, आप ये ध्यान रखना, except maximum principal stress theory, remaining all other theory of failure gives good results for ductile material. Maximum principal stress theory of failure gives better results for brittle material. ठीक है, ये पॉइंट नहीं तो आप कहीं पे नोट करके रख लो, that except maximum principal stress theory, all other theory of failure gives good results for ductile material, and only maximum principal stress theory of failure gives better results for brittle material. क्लियर है? एनी डाउट? हाँ सर क्लियर. सर ये जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसका नाम भी सर पूछता है कभी, वो रैंकाइन थ्योरी है इसका. मैं एक और चीज बता देता हूँ इसमें. अब ये जो डिफरेंट थ्योरी ऑफ फेलियर है, ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पे भी ये पूछता है गेट में कि ट्रेस्का थ्योरी ऑफ फेलियर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रेस्का थ्योरी ऑफ फेलियर. 4 ऑप्शंस दे देगा आपको. ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, आप चाहो तो आप लिख सकते हो. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर इज आल्सो नोन एज रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर. ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर इज आल्सो नोन एज रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर. आपको ये भी पूछा जाएगा कि which one of the following is a type of Rankine theory of failure. 4 ऑप्शन दे देगा. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, shear stress theory, principal strain theory, total strain energy theory. तो आपको पता होना चाहिए कि that is nothing but maximum principal stress theory. ठीक है, एनी डाउट? हेलो. नो सर क्लियर है. इसका एक और नाम होता है, तीसरा नाम भी है, दैट इज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर. टोटल 3 नाम है. फर्स्ट नेम इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर. Second name, Rankine theory of failure on the basis of the scientist who has discovered. Third name is maximum normal stress theory of failure. अब ये थ्योरी क्या बोलता है? This theory tells you that any material that according to this theory failure of any component will take place if the maximum principal stress at any point in that component exceeds the value of stress at the elastic limit in simple tension. That means अगर मान लो ये मेरा component है, इस component में अगर ये 3D component है, तो मान लो x डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा 1, y डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा 2 एंड z डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा 3. ठीक है, अब इस कंपोनेंट का जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, मैं मान लेता हूं कि सिग्मा 1 इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. ठीक है, तो मटेरियल कब फेल करेगा? जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट मींस सिग्मा 1 इज इक्वल टू the yield strength of this material or the ultimate strength of this material when this material is tested in UTM. मतलब जैसे ही इसमें yield हो जाएगा then sigma 1 is equal to SYT by FOS के बराबर होगा.
जब तक इसमें यील्ड नहीं होगा सिग्मा वन जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा दैट कैन नॉट बी इक्वल टू SYT बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आया समझ में? हाँ सर, क्लियर है। देखो सिग्मा वन इज इक्वल टू SYT अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है तो इट विल बी SYC बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इफ इट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ इट विल बी SUT बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, or ultimate strength in compression it will be SUC by factor of safety. Now this sigma 1 sigma 2 will vary from question to question. If it is, there is a 3D body, if in that 3D body sigma 2 is greater than sigma 3 and sigma 1, then this formula becomes sigma 2 is equal to SYT by factor of safety and so on. आया बात समझ में? Any doubt? No, sir. Fine, okay. So this is your maximum principal stress theory. Next one is maximum shear stress theory. इसके दो नाम हैं, पहला नाम है Guest theory of failure, second name is Tresca's theory of failure. दोनों ही साइंटिस्ट थे, दोनों के ऊपर नाम है, तो किसी भी नाम को चेंज करके पूछा जा सकता है आपसे चार ऑप्शन में। तो यू शुड नो दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज आल्सो नोन एज गेस्ट थ्योरी, इट इज आल्सो नोन एज ट्रेस्कास थ्योरी, इट इज आल्सो नोन एज कूलम्स थ्योरी, आल्सो कूलम्स थ्योरी भी बोलते हैं, गेस्ट थ्योरी और ट्रेस्कास थ्योरी और कूलम थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, ये थ्योरी ये बोलता है कि कोई भी मटेरियल तभी फेल करेगा जब उस मटेरियल का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है that maximum shear stress becomes equal to maximum shear stress of a standard specimen that you are testing it in UTM। आया बात समझ में, लैंग्वेज समझ में आ गया? Maximum shear stress theory, what it tells you that any material will fail only when maximum shear stress of that material becomes equal to the maximum shear stress of a standard specimen that you test it in UTM। UTM में जो आप स्टैंडर्ड स्पेसिमेन को टेस्ट करते हो उस समय जो उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है अगर वो बराबर हो जाए किसी भी कंपोनेंट के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से, then according to this theory that material will fail। ठीक, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, मैंने आपको बोला ही है इन द प्रीवियस स्लाइड्स, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 by 2 if it is in xy plane, if it is in yz plane it will be sigma 2 minus sigma 3 by 2, if the body is in zx plane it will be sigma 3 minus sigma 1 by 2 and that value will be equal to SSY by factor of safety। What is SSY? SSY is yield strength in shear and I know that SSY is nothing but 0.5 times of SUT। ये डेराइव कराया था मैंने जब पढ़ाया था, ठीक है, ध्यान रखना, SSY is nothing but 0.5 times of SUT। So in place of SSY I can write SYT by 2 into factor of safety। So the ultimately the design equation becomes sigma 1 minus sigma 2 is equal to SYT by factor of safety, or sigma 2 minus sigma 3 is equal to SYT by factor of safety, or sigma 3 minus sigma 1 is equal to SYT by factor of safety if I consider the entire body in 3D। Is it clear? किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, ओके, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है while solving problems। नेक्स्ट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसका एक और नाम है दैट इज सेंट विनेंट थ्योरी, साइंटिस्ट के ऊपर है सेंट विनेंट थ्योरी, तो आपको पता होना चाहिए, नाम चेंज करके पूछ देगा दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट विनेंट थ्योरी। मैं आप चार ऑप्शन दे देगा तो आपको सही ऑप्शन पिक करना है। ठीक, अब ये क्या बोलता है, दिस थ्योरी टेल्स यू दैट failure of the component will occur when maximum strain in that component reaches the value of strain in uniaxial stress at elastic limit। That means कोई भी component तभी फेल करेगा जब इस component का maximum strain
बराबर हो जाए उस कंपोनेंट के मैक्सिमम स्ट्रेन से जिसको आप यूटीएम में एनालाइज कर रहे हो। सिंपल है, ठीक है। Say if the body is in 3D, there are 3 strains along 3 axes. E1, I am denoting that those strains by E1, E2, E3, and these relations already you have studied. These relations, E1 is nothing but sigma 1 minus mu times of 2 plus 3 into 1 upon E. E2 is nothing but 2 minus mu times of sigma 3 plus sigma 1 into 1 upon E. ये पढ़ा है कि नहीं रिलेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में? हाँ सर पढ़ा ये है। रिलेशन पढ़ा है, फाइन। सो if I assume that strain along x axis is higher than that of y and z axis, then material will fail when this E1, that means this value, this E1 is this value, that is sigma 1 minus mu times of sigma 2 plus sigma 3 by E, that is equal to strain of that component which you are testing it in UTM. तो यूटीएम में जब आप किसी भी कंपोनेंट को एनालाइज करते हो तो वहां से आप निकालते हो क्या, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फाइन। एंड स्ट्रेस इज हाउ मच, सिंस this theory is valid for ductile material, so maximum this material can fail at the yield point, so stress becomes SYT divided by E into factor of safety. So this is your final design equation which you will use if you have to solve problems on the basis of this theory. Is it clear? Sir, can you please repeat, sir, once again, sir? Once again repeat करता हूं मैं। This theory tells you that कोई भी मटेरियल तभी फेल करेगा जब उस मटेरियल में जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा, मान लो इस मोबाइल का जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा, दैट मैक्सिमम स्ट्रेन इज नथिंग बट E1। मान लो ये मोबाइल यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं, तो उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, दैट इज E1। व्हेन दिस स्ट्रेन बिकम्स इक्वल टू the strain of that component which you test in UTM. UTM में जब आप टेस्ट करते हो किसी भी तो वहां से आपको रिलेशन मिलता है, क्या मिलता है, that stress is directly proportional to strain at the elastic limit. So stress is equal to modulus of elasticity E into strain. Strain becomes stress divided by modulus of elasticity. अब stress क्या करेगा, वैरी करेगा। अगर मटेरियल डक्टाइल है, stress will be SYT. If material is brittle, stress will be SUT. Since this theory is valid for ductile material, so that stress will be nothing but SYT upon E into factor of safety. E cancel down, your final equation becomes sigma 1 minus mu times of sigma 2 plus sigma 3 is equal to SYT by factor of safety. Then you will use this equation to get the other unknown values. Clear है? Yes, sir. अब यहाँ पे अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि E1 is greater than E2। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में E2 is greater, किसी प्रॉब्लम में हो सकता है E3 is greater. Then if E2 is greater, then I have to use this E2 formula. Then this E2 will be equal to this SYT by E into factor of safety, or E3 will be equal to SYT by E into factor of safety, and so on. डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे मान लिया कि स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है? कोई डाउट है किसी को? No, sir. Okay, I think that attendance link is active, what I can see. So please give your attendance in that attendance link which DKD sir has given. It is active. Okay. Next topic. Next is your maximum distortion energy theory of failure. इसका दो नाम है, दूसरा नाम है उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी ऑफ फेलियर. थर्ड नेम इज ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड दिस थ्योरी, दैट इज वॉन माइसेस और हेंकीज थ्योरी ऑफ फेलियर. टोटल 4 नाम है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर एंड मैक्सिमम वॉन माइसेस और हेंकीज थ्योरी ऑफ फेलियर. ये थ्योरी क्या बोलता है? ये थ्योरी ये बोलता है कि कोई भी मटेरियल तभी फेल करेगा जब उस मटेरियल का स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिस्टॉर्शन के टाइम पे
जब किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन पर यूनिट वॉल्यूम इन यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। आप ध्यान से देखो, एवरी टाइम ये लोग क्या कर रहा है, हर एक कंपोनेंट को यूटीएम के साथ वेरी कर रहा है। जब यूटीएम पे जब वो कंपोनेंट फेल होगा तब इक्वेशन लगा के नया इक्वेशन डिराइव हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये थ्योरी ये बोलता है कि दिस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी मटेरियल विल फेल इफ the distortion of that component per unit volume becomes equal to the distortion of that component per unit volume which you are testing it in UTM. Fine. So if I assume that it is a 3D body, then आपको याद है मैंने आपको डेरिवेशन कराया था फिफ्थ सेमेस्टर में 14-15 पेजेस का जो डेरिवेशन था वॉन माइसेस थ्योरी का, याद है आप लोग को? सर डेरिवेशन पूरा तो याद नहीं है लेकिन कराया था ये। डेरिवेशन याद करने का जरूरत नहीं है, डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, आपको मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो जो 7-8 फॉर्मूला याद है, डेरिवेशन नहीं याद। yes, so from that derivation this formula comes that for a 3D body material will fail according to this theory when sigma 1 minus sigma 2 square plus 2 minus 3 whole square plus 3 minus 1 whole square is equal to 2 times of SYT by factor of safety का whole square। अब अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है कि 2D बॉडी है, then in that case sigma 3 will be 0। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 है ही नहीं, देन सिग्मा 1 सिग्मा 2 0, आपको सिग्मा 3 को लेकर चलना पड़ेगा। सो इफ आई एम अज्यूमिंग टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, इन दैट केस सिग्मा 3 is 0, that same equation reduces and takes the shape sigma 1 minus sigma 2 whole square plus sigma 2 whole square plus sigma 3 whole square। फिर ये sigma 1 minus sigma 2 whole square को you can divide it into a minus b whole square। जब आप properly solve करोगे you will get this expression, that is sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2 equal to SYT by factor of safety whole square। तो बेसिकली आपको these two equations को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर 3D अगर किसी क्वेश्चन में 3 डायमेंशनल कंपोनेंट दिया हुआ है और फिर बोला गया कि आप ये थ्योरी यूज करके कुछ डायमेंशन निकालो, then you will use this above expression। and if in the same question if something they are asking about 2D problem, then you will use the second equation। कोई डाउट किसी को? सर इसका जो सर डेफिनेशन है सर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? डेफिनेशन ये बोलता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन से क्या समझ में आता है आपको? डिस्टॉर्शन बोला, आप डिस्टॉर्शन से क्या समझ में आता है? सर ये डिस्टॉर्ट सब वो क्या बताएं सर? वो डिस्टॉर्शन का मतलब होता है शेयर का एक एक्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है शेप में चेंज होना। यस सर, शेप में चेंज होना, ठीक है। तो ये थ्योरी ये बोलता है कि कोई भी बॉडी तभी फेल होगा, ठीक है, अगर आप उस बॉडी पे किसी भी तरीके से अगर उस बॉडी को आप डिस्टॉर्ट कर दो, अगर उस तरीके को आप इक्वल टू इक्वेट कर दो जब आप उस बॉडी का शेप और साइज चेंज कर रहे हो इन यूटीएम। ये आपका बॉडी है, इसको आप किसी भी तरीके से इसका शेप साइज चेंज करो, ठीक है। ये बॉडी तभी फेल करेगा जब आप एक स्टैंडर्ड बॉडी जिसको आप यूटीएम में टेस्ट करते हो, जब उसका शेप साइज चेंज हो जाए ड्यू टू यूनिएक्सियल लोड। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस थ्योरी। ओके सर, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, कोई नहीं पूछेगा। आपको मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कभी कभी क्या करेगा, ये फॉर्मूला ही दे देगा, 4 ऑप्शन बना के ये फॉर्मूले को 4 तरीके से चेंज करके पूछ देगा दैट व्हिच वन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर वॉन माइसेस थ्योरी ऑफ फेलियर। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? No sir, no sir. Okay. Next theory, and I think this is last theory. Yes, this is the last theory. And the last theory is maximum total strain energy theory. इसका 2 नाम है. One name is called Beltrami and the second name is Hayes theory.
Either you call it as maximum total strain energy theory or Beltrami and Hayes theory. Again इसका नाम याद होना चाहिए, किसी भी नाम से पूछ सकता है. Fine. So according to this theory, any component will fail when maximum strain energy per unit volume at a point reaches the value of strain energy per unit volume at elastic limit in simple tension test. That means, मान लो ये मेरा बॉडी है, इस बॉडी का जो स्ट्रेन एनर्जी होगा, मतलब बॉडी तभी फेल करेगा जब इस पर्टिकुलर बॉडी का स्ट्रेन एनर्जी को मैं इक्वेट करूंगा. किससे इक्वेट करूंगा? उस कंपोनेंट से इक्वेट करूंगा जिसको मैं यूटीएम में टेस्ट कर रहा हूं. यूटीएम में टेस्ट करके उसका स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहा हूं. अब आया बात समझ में? हेलो. हाँ सर. Fine. So I know that strain energy stored in a body is given by half into stress into strain. Fine. So if sigma 1, sigma 2 and sigma 3 are three principal strains along three axes, then overall strain energy in the body will be how much? Summation of all the three strain energy along all the three principal axes. So it will be sigma 1 at E1 by 2 plus sigma 2 E2 by 2 plus sigma 3 E3 by 2. E1, E2, E3, already you know this formula. Substitute this formula in this expression. That is sigma 1 E1 by 2 plus sigma 2 E2 by 2 plus sigma 3 E3 by 2. Substitute the value of E1, E2 and E3 from these things. Then you will get this resulting expression. That is sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus 2 mu in bracket sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1 bracket close equal to SYT by factor of safety whole square. So ultimately I have to remember this expression in order to solve problem. अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तब तो फिर आपको डेराइव करके निकालना पड़ेगा. अगर आप याद रख पा रहे हो then well and good. कोई डाउट किसी को? No, sir. नहीं सर ठीक है. So this is your brief idea about different theories of failure. I don't think we are having enough time. 3 minutes are left. So today it won't be possible for me to cover the numericals part on these topics. So I will cover this numerical part in the next class. But let me cover this portion. This is the last portion. Fine. Now, अब अगर आपने देखा होगा गेट का पेपर 2011 में ये ग्राफ से क्वेश्चन आया था. अगर आपने किसी ने देखा होगा गेट का पेपर 2011 में इस ग्राफ से क्वेश्चन आया था. मैंने आप लोगों को कराया था लास्ट सेमेस्टर में कि अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से फेल हो रहा है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, अगर शियर स्ट्रेस थ्योरी से कोई मटेरियल फेल हो रहा है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, अगर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर से कोई मटेरियल फेल होता है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है. ग्राफ क्या है? ग्राफ इज नथिंग बट इन एक्स एक्सिस यू आर हैविंग प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, along y axis you are having second principal stress sigma 2. On this sigma 1 sigma 2 plot you are plotting three different theories of failure. ठीक है. तो हमेशा याद रखना जो रेक्टेंगल बनता है, ये मैंने कराया था, आप मेरा नोट्स भी चेक कर सकते हो. जो रेक्टेंगल जो बनता है दैट रेक्टेंगल इज फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. फाइन. दिस ellipse kind of shape, this is for distortion energy theory of failure, and this theory, that means let me draw it and it will be clear to you. Wait. Draw. Okay. So this is my sigma 2 if I'm talking about a 2D body. Fine. And this is my sigma 1. This for principal stress theory, this is the diagram.
because principal stress theory tells you that the material will fail when sigma 1 reaches either SYT or sigma 1 reaches minus SYT or sigma 2 reaches plus SYT or sigma 3 reaches minus SYT. So it will be a straight line covering all the four regions. It will be a triangle. This is for maximum principal stress theory of failure. Fine. तो For ये सर आपने कराया था क्लास में? ये मैंने कराया था, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ग्राफ का नेचर याद रखो, क्योंकि ये ग्राफ का नेचर पूछा गया है ऑलरेडी 2012 में। हाँ सर, ये पूछा गया है। ग्राफ कौन सा थ्योरी को बिलोंग करता है? फाइन, सो दिस बिलोंग्स टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एंड दिस ग्राफ like this and this graph, this belongs to maximum shear stress theory. This graph belongs to maximum shear stress theory, this portion. And for von Mises stress theory of failure, since the equation of that von Mises stress is ellipse, is in the form of ellipse, so that will be like this. This diagram is for maximum distortion energy theory of failure. वही डायग्राम वहां पे बना हुआ है। तो आपको तीनों डायग्राम का नाम पता होना चाहिए कि ये जो रेक्टेंगल है ये कौन सा थ्योरी ऑफ फेलियर है, ये जो इलिप्स वाला जो डायग्राम है दिस इज व्हिच थ्योरी ऑफ फेलियर, एंड दिस हेक्सागन टाइप ऑफ डायग्राम इज फॉर व्हिच थ्योरी ऑफ फेलियर। ये मैंने कराया था आपको, अगर आपको याद होगा तो। हेलो यस सर, यस सर। अगर आप लोग को याद है तो ये मैंने कराया था, ठीक है। तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये ग्राफ से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो इससे पूछा जा, और ये पूछा गया था 2011 में, बहुत टाइम हो गया है। अभी 2021 में हो सकता है चांस हो कि ये पूछा जाए फिर से, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हेलो हाँ सर, मैं थोड़ा निकल गया था मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए। अच्छा सर थोड़ा इससे मतलब 3-4 मिनट हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो बोलो। एक बार थोड़ा रिपीट कर देंगे क्या? मैं ये बोल रहा था कि मैंने ये ग्राफ कराया था आप लोग को, जब मैं थ्योरी ऑफ फेलियर डिस्कस किया था, जब आपके रेगुलर क्लास में। आई हैव डिस्कस दैट हाउ दीज ग्राफ्स आर कमिंग, हाउ फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर इट विल बी अ रेक्टेंगल, हाउ फॉर shear stress theory of failure it will be a hexagon, and for distortion energy theory of failure it will be an ellipse. So basically you have to remember the shape of these graphs, because they will ask you, it has already been asked in 2011 GATE paper, that they will give you these three diagrams and they will tell you that match the following, कि ये जो रेक्टेंगल है ये कौन से थ्योरी ऑफ फेलियर को बिलोंग करता है, ये जो हेक्सागन वाला शेप है ये कौन से थ्योरी ऑफ फेलियर को बिलोंग करता है, ये जो आपका इलिप्स वाला जो शेप है ये कौन से थ्योरी ऑफ फेलियर को बिलोंग करता है। तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग, कि आपको ये डायग्राम और ये कौन से थ्योरी ऑफ फेलियर को बिलोंग करता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। यस सर, यस सर। सर ये रिपीट भी हुआ है काफी बार, एक दो बार रिपीट भी हुआ है। जहां तक मैं जानता हूँ 2011 में आया था, 11 या 12 में आया था, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व 3 न्यूमेरिकल्स एंड देन वी विल स्टार्ट द फटीग पार्ट, ठीक है। कोई डाउट है किसी को आज की क्लास में? नो सर। Okay, so if you No sir, thank you sir. If you want to see these lectures by today day end, I will post this lecture in my YouTube channel. You can go over there and you can check these lectures. ठीक है? Sir, will you send the PDF also? पीडीएफ भाई भेजूंगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली देखो क्या हो रहा है ना, ग्रुप में इतना सारा मैसेज आ रहा है, तो आप जब आप तो ऐसा नहीं कि आप आज ही पढ़ोगे, आप हो सकता है 10 दिन के बाद पढ़ो, 5 दिन के बाद पढ़ो, तो आपको मिलेगा नहीं। तो बेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल में चले जाओ मेरे, उसमें पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर रहता है, मैं डालते रहता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है सर, ठीक है। तो आप वहाँ पे आज रात तक मिल जाएगा आपको, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, आप उसको जब चाहो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम राइटिंग SUBHANKAR
MOULICK। वहां पे फाइनाइट एलिमेंट का लेक्चर भी है, कल हम लोग का फाइनाइट एलिमेंट का क्लास है, वो लेक्चर मैं सब लेक्चर वहां पे ही डालता हूँ, ठीक है। मैं जानबूझ के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ, इससे क्या प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर वो कब दिया था आपने पता नहीं है, अभी मिल नहीं रहा है मेरे को, तो उससे अच्छा है कि आप इस सर चैनल आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर भी मैंने देखा था, लगता है पीडीएफ सर हम लोग अरेंज करके रखते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो जैसे आप भेजते हैं डाउनलोड करके अरेंज कर देते हैं। सर ठीक है आप डीकेडी सर का मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या, वो गूगल फॉर्म वाला? यहाँ पे है, आप देखो, मैं अभी सर मैं तो निकल गया था, एक्चुअली मैं निकल गया था इसलिए मुझे शो नहीं। I am again posting, wait, copy the link address, paste। हाँ मैंने पोस्ट कर दिया, देखो इसी से भर लो आप। हेलो, ठीक है। हाँ सर, तो थैंक यू। आप लोग, हाँ तो वो उसमें आपको एफईएम का भी लेक्चर मिल जाएगा, जो कल जैसे एफईएम का होगा तो कल रात तक उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप उस चैनल को फॉलो करते रहो रेगुलरली, आपको मिलते जाएगा रोज का रोज नोट्स जो भी है। और बाकी तो पूरा जब खत्म, जैसे मान लो मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा जब, दैट इज ये थ्योरी ऑफ फेलियर, फटीग पार्ट, स्टैटिक पार्ट, डायनामिक पार्ट, देन फिर मैं एक साथ करके पीपीटी भेज दूंगा पूरा एक का। ठीक है ओके सर। सर, ओके सर। ओके 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 सर ओके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पढ़ा रहेगा इस बार? मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर लोगों वाला। सेकेंड ईयर में पढ़ा रहा हूँ मैकेनिक्स। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, उसका लेक्चर देखा था सर। लेक्चर भी उसमें है, अगर तेरे को मैकेनिक्स देखना है गेट का तो वहां से देख सकता है, वो लेक्चर भी वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर। ओके ओके सर ओके। गेट के लिए तो कुछ भी चलेगा, कोई भी लेक्चर देख लो वही काम पे आएगा। ओके, ठीक है देन। आई एम गोइंग आउट फ्रॉम दिस मीटिंग, ओके। ओके सर, ओके सर। वी विल मीट थैंक यू सर। टुमारो 1 PM फॉर 1 PM। क्लास। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू।